अब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम लीड कोड 724। प्रॉब्लम है फाइंड पिवट इंडेक्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड पिवट इंडेक्स इन array where sum of elements on left is equal to sum of elements on right. What does this mean? Or return -1 if no such element or in index exists। तो अगर हमारे पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल लेट्स से लीड कोड वाले ही ले लेते हैं 173656 173656। तो वी हैव टू फिगर आउट अ इंडेक्स जहाँ पे sum of elements in left is equal to sum of elements on right. For example, in this array, if we look at this index right here, sum of elements on left is 1 plus 7 plus 3, which is 11. Sum of elements on the right, which is 5 plus 6, which is 11. तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इनिशियल अप्रोच जो समझ में आती है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन just create an array जहाँ पे हम चेक करते जाएं, like for example what we can do is brute force solution would be to go through all the element at once and then keep the sum of, just keep us a record to check if that index is pivot or not. For example, if let's say we have 1 7 3 6 5 6, brute force solution कैसे निकलेगा? We will have first loop where we have int I is equal to 0 say I is less than n I plus plus, and inside we will have a will have another loop जो सेम चीज़ चेक करेगा for int j is equal to 0 say j is less than I j plus plus sum left plus equal to array j, right? And for int j is equal to I plus 1 say j is less than n j plus plus sum right plus equal to array j, and then temp array of I is equal to check sum left equal to sum right true false. Okay, तो यहाँ पे we have a solution which will run on in time complexity of O n square and space complexity of O n, right? क्योंकि we have two loops, we have
2 लूप्स, राइट, इसलिए ON² और यहाँ पे हमारे पास में है, अब हम यहाँ पे एक टेम्प एरे मेंटेन कर रहे हैं, सो इट इज़ ON. Okay, now how to create a better solution with time complexity in terms of ON. इसके लिए what we'll do, we will uh, create two arrays. We will create two arrays, one to maintain sum on the left of the element. So instead of having a variable, we'll keep an array itself, which will be sum on left array, right, and then we'll have sum on right array, and फिर हम इसको ट्रेवर्स करेंगे फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 से I इज लेस देन n I प्लस प्लस, जिसमें if sum on left equal to sum on right I return I, right, easy. ये है एक बेसिक सॉल्यूशन जहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ इम्प्रूव टू ON and now space complexity is also ON, right? Now how to code this solution? We have एक लूप चलेगा for int I is equal to 0 से I is less than n I plus plus, okay, and I is equal to 0 से नहीं चलाते, इसको I is equal to 1 से चलाते हैं, and इससे पहले या फिर let me write complete method, let me write complete method, okay. Public int pivot index and ARR, right, int n is equal to array dot length and sum left is equal to new int n and int sum right is equal to new int n, okay. And यहाँ पे we'll have to initialize few elements beforehand, so sum left 0 equal to 0, right, because फर्स्ट एलिमेंट का जो भी लेफ्ट में है उसका लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो इट इज़ बेसिकली 0, राइट, एंड सम राइट के n-1 पोजीशन पे देयर इज नथिंग बिकॉज उसके राइट में कुछ भी नहीं. नाउ वी विल रन आवर लूप एंड I is equal to 1 से चलेंगे बिकॉज वी हैव 0th पोजीशन, I is less than n I प्लस प्लस. यहाँ पे sum of left I will be sum left I minus 1 plus array I minus 1. Make sense? And sum right will be, नहीं not I, यहाँ पे
क्योंकि सम राइट को हम आई से इनिशलाइज इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वी विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट साइड, है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर हमारे पास 1 4 3 व्हाट वाज आवर एरे, आवर सैंपल एरे वाज 1 3 7 6 5 6, राइट। तो सम ऑफ लेफ्ट हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे विच विल बी 0 then 1 then 4 then 11, then 11 plus 6 will be 17, 17 plus 5 will be 22, 28, right? And sum on right will be 0 6 11, 11 plus 6 will be how much? 11 plus 6 will be 17, and then we have 17 plus 7 24, then we have 24 plus 27, 27 plus 1 28. Okay, so this is our sum of sum right array and this is our sum left array. Okay, तो यहाँ पे for example अगर हम देखें तो we know that at none of this position 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7, how is it, how does it has 7 elements? Should not have 7 elements, right? Okay, mistake is here, here is a mistake, we cannot add this, my mistake, my bad. Let me do this again. हमारा एरे है 1 3 7 6 5 6, तो sum left will be 0 1 4 11, 11 plus 6 17, 17 plus 5 22, 0 6 11 17, 17 plus 3 will be 20, 22. Yeah, okay. Now we know at this position both elements are same, so this is our pivot index. That's what we did, right? That's what we did here. So we are doing this, so क्योंकि सम राइट हमारा राइट सम लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सम राइट विल बी n minus I minus 1 is equal to sum right n minus I minus 1 हटा देंगे because in the case of sum right we are taking the element on the right side into the consideration, so I minus, okay, we'll have to remove this, plus array n minus I minus 1, right, and done. Now we will run another array, another loop, int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, if sum on left of I equal to sum on right of I, return I, right, else return minus 1. Done. Solution done.